ओके, तो लेट्स मूव अक्रॉस विद द बेसिक ऑपरेशन इन द टपल्स एंड लिस्ट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था बेसिक ऑपरेशंस इन टपल्स लिस्ट डिक्शनरी एंड द सेट्स पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे टपल्स एंड लिस्ट के बारे में। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने कोड बेस में। ओके, तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टपल्स एंड लिस्ट ऑफ। ओके, तो अपन सबसे पहले बेसिक लिस्ट क्रिएट करते हैं। कि print, ओके, देन इसके बाद हम एक टपल क्रिएट करते हैं साथ ही साथ में उसके ऑपरेशन सेम रखते हैं, बिल्कुल वैल्यूज जहाँ पर आगे दिक्कत नहीं आएगी। print and मैं आपको दोनों के ऑपरेशंस पैरेलली बताऊंगा जो आपको रिमेम्बर रहेगी, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट, लिस्ट यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो हम बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, प्रिंट आके देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने प्रिंट करा के देखा है, ये वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली, फाइन। ओके, तो सबसे बेसिक ऑपरेशन मुझे लाइन फाइंड आउट करनी है। तो लाइन फाइंड आउट करने के लिए एक ऑपरेशन होता है, प्रिंट लाइन। लाइन इज अ प्री डिफाइंड in Python, and you can access for that help. Okay, the len L, fourth len cube. Okay, similarly for that I'll try to access in this case 5 added M. Okay, that's showing the 4 part. Okay, the star I try added to new one. Yes. Okay, okay, 5. The first operation for the length. The second operation, then how you can access in particular indexes, how you can print in the particular index. Then you have a two method. First is for the indexing method that I'll show you. L of 0, that indexing which is present for the 0 to length minus 1, right? The length of that particular is 4, that showing the third 0 1 2 3. Okay, yeah, that prints the 23. Okay, similarly for this case I'll try to use in tuples as well as 23. Nice. I'll add it for the len of m minus 1. Okay, VSC, that last one. Okay, the first method is you can access directly with the indexing. The second method is for the slicing part. That will I'll go through the depth part in after the overall this data types in completed. That I'll show you the how the indexing is working. That if I'll do the 1 colon 4, then ये क्या प्रिंट करता है देखते हैं। ओके, 1 colon 4 मेरे को ये प्रिंट करके दे रहा है, मीन्स that selecting the one syntax and showing the last index as well as, right. The 1 colon 4 is determined that you can access the one index for that and you cannot you can access the one index for that, and you can leave behind the fourth index that before you can use that, right. That means that इसका मतलब ये है कि वन फर्स्ट वाली इंडेक्स तो यूज होगी, बट जो फोर्थ वाली इंडेक्स है उससे एक माइनस वन यूज होगी, राइट। ओके, तो 1 2 3, तो मेरे को बेसिकली यहाँ पर करके दे रहा है 1 2 3। फोर्थ इंडेक्स बेसिकली मेरे पास है भी नहीं तो मेरे को शो भी नहीं कर रहा, तो फोर्थ इंडेक्स यहाँ पर मैं यहाँ पर शो कराने की कोशिश करता हूँ कि शो करेगा ही नहीं करेगा। यहाँ पर एम लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे को देखो फोर्थ इंडेक्स शो नहीं कर रहा, मींस मेरे को 1 2 3 वाला डाटा निकाल के दे रहा है, तो लास्ट वाली इंडेक्स मुझे शो करके नहीं दे रहा। तो बेसिक स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यही होता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स तो आपकी लेगा,
सिंटेक्स बेसिक सिंटेक्स स्लाइसिंग और ये होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, तो वो आपको शो करेगा, और जो लास्ट वाली इंडेक्स होती है वो आपको शो नहीं करेगा, उससे पहली वाली इंडेक्स तक आपको शो करेगा डाटा, राइट। You can move across with, you can just play across with this, and अपन इंडेक्सिंग से एक और तरीके से एक्सेस कर सकते हैं डाटा विद द हेल्प ऑफ दैट reverse order of indexing. Means the minus one data I'll started for this case, and minus two, minus three, minus four, and minus five. This I'll show you it, that I'll use in this case. That if I'll use the minus one, that showing the print of v, okay. See, that's showing the print of v, right. Minus one data I'll used for the two part, okay. That's showing the wiki of minus टू, मेरे को दूसरी इंडेक्स शो कर रहा है साथ ही साथ, पीछे से, बिहाइंड से, -1, -2, -3 and -4. For the forward side, you can move from the left to right, 0, 1, 2, 3, and you can move from right to left, -1, -2, -3. Okay, I remember this. Okay, this is the part for the slicing. Then third part of that, you can access, you can update in a list. आप लिस्ट में अपडेट कर सकते हो, बट टपल्स में आप अपडेट नहीं कर सकते पर्टिकुलर इंडेक्स से। तो अपन ये वेरीफाई करते हैं, ओके। तो बेसिकली 1 is equals to uh, 1 is equals to uh, 2, okay। If I'll change for the 2 for the wiki part, right, I'll print of 10 comma updated list, okay। See, it's update on the one first index, that before updations is 2345 wiki, and the after updation that I'll जैसे मैंने बताया था कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अपन इंडेक्स को हम इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने 0, 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग वन वाली इंडेक्स सेलेक्ट करी, एंड उसमें चेंजेस करें, ओके। तो बेसिक ये था टपल्स का, right, for accessing of that. If I try in the tuple part, that's showing the error. I'll show you. Wait. M is m1 is equals to 2. Okay. See, it's showing the error that shows a tuples object does not support the item assignment. Okay. ये बेसिकली हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सारी की सारी टपल्स और उनकी, that follows the that part. Okay. तो ये अपन कमेंट आउट कर देते हैं, रीजन tuples not support assignment. It means that it is immutable in nature. Immutable means which cannot change. Okay, immutable, mutable in nature. Okay, or this is for the accessing part and updating part, and the other part is for the uh, append part. Okay, now you can append any list, any that you can increase any length, and you can append in the last of the list. And how you can do that append function, which is predefined function that you can throw, that showing the snippets, that cool snippets that showing in the pie chart, okay, that you can access to, okay। If I try to append in as well as the first part, okay, by cross, okay, and dot append, which is not work, that you can append in tuples object, you cannot modify in this, okay, that works for the basis property. I'll just append 2, and now after appending I'll print that, okay, append 2 in list, and okay, append 2 in a list. After appending that, showing this 2 in a list, okay, but you cannot access in this case tuples, right. This is the immutable property that's showing in this case. uh,
the basically this is the part of the append. If you want to delete any part of the any part of in a list, that which is from the n indexes, right? If I want to delete in an index, that I select to 2, which is showing after appending that 0 1 2. The wiki is delete now, that I'll show you. Print after append or index in list L. Okay, see, the wiki is now gone. That the wikis pop out, जो हमारा wiki pop out हो चुका है इसके अंदर से. uh, तो हम इसको टपल्स में भी यूज करके देखते हैं. एम डॉट पॉप, देखो बेसिक अपनों को ये भी शो नहीं कर रहा कि इसका डायरेक्ट स्निपेट्स भी शो नहीं कर रहा. तो बेसिकली इट्स नॉट यूजेबल दैट पार्ट. I'll show you as for your reference. That's showing the error that you cannot any changes, you cannot any modifications. Okay, this is the nature of immutable, that you're not able to change any part of that. Okay, the last part of this is going to the L dot sort. L dot sort, that sorting in the laxer in the form of sorting. Okay, uh, similarly for sort, that which is not used in a S case because you cannot modify in this case as well as. Okay, I'll show you in the list part. I'll be print list L of this sorting. Sort list. Okay, similarly, and I'll show you here auto sorting L dot list dot stl. This is not a you cannot able to sort for that because you can enter the different type of data, right? If I enter this as a manner of, so suppose I'll just try to create another one for string L1 is equals to 1 comma 2 comma 34 comma 4 comma 23 comma 56 comma 30 123. Okay, L1 dot sort and L1. I'll try to run. After that, the errors is gone and showing the 1 2 2 4 2 34 34 23. Okay, this is the for the sorting part that I'll show you. For the sorting have you have a condition. Sorting में आपके पास एक condition होगी, वो must है कि आपको एक तरीके का ही डाटा टाइप यूज करना है. चाहे तो 1 2 3 4 5 6 इज एज ए नंबरिंग फॉर्मेट में हो या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट, बिकॉज दैट सॉर्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग इज लॉजिकल ऑर्डर. ओके, एबीसी फॉर्मेट एट एबीसी ऑर्डर दैट शोइंग फॉर दैट. ओके, तो मैं इस वीडियो में इतना ही बेसिक ऑपरेशंस ऑफ दैट. अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है तो W3 स्कूल से आप एज ए रेफरेंस यूज ले सकते हो. तो मेरी साइड से इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.